जय जगन्नाथ। वेलकम टू मिट्स ओडिया। समस्त को आज क्लास को स्वागत। आशा करछि समस्ते भलरे थिबो। वेरी गुड मॉर्निंग सुश्री। वेरी गुड मॉर्निंग। अन्य माने गले कुआडे आछुंदी बोधे रास्ता रे छुंदी। सब दौड़ी दौड़ी के आछुंदी। आछुंदी। अच्छा। तो आमे टिके क्विक रिवीजन कर दबा जे पर्यंत अन्य माने न आछुंदी। आमे टिके आज क्विक रिवीजन कर दबा जेमती आमे समस्ते जिनस गुडा को डिटेल्स रे पढ़ी परिबा आउ देखि परिबा। आउ आजर क्लास रे आमे कोन पढ़िबा? आजर क्लास रे आमे पढ़िबा आरएनएस इक्वेशन एंड द रिलेटेड प्रॉब्लम्स। आरएनएस इक्वेशन आउ ता रिलेटेड प्रॉब्लम किछि पढ़िबा। ठीक अछि। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ। सो आमे देखिथिले व्हाट इज योर काइनेटिक्स। काइनेटिक्स माने जोठी हमें रेट और मेकानिज्म ऊपर पढ़िबा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन थिला तुम्हारा फास्ट और इंस्टेंटेनियस जो गुडा को बहुत फास्ट ही था। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। मॉडरेट रिएक्शन जति सब हाइड्रोलिसिस ही था। और स्लो रिएक्शन होची तुम्हारा रस्टिंग ऑफ आयरन जोटा तुम्हें पढ़िबो कोठी तुम्हारा ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रे। तापर रेट ऑफ रिएक्शन जदि हम देखिबा, रेट ऑफ रिएक्शन कोन होची? रेट ऑफ रिएक्शन धीरे 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 ग्रेजुअली कमी कमी जाउची जेतोले हमर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बढ़ुची। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़िले रेट ऑफ द रिएक्शन कमी कमी जाउची, राइट? नमस्ते सोनो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। भलरे थांतु समस्ते। लक्ष्मीधर गुड मॉर्निंग। आ प्रोडक्ट रो जदि हम देखिबा, प्रोडक्ट कथा, प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीज ही जाउची जेतोले हमर रिएक्शन बढ़ी बढ़ी जाउची। समस्ते शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर दियो क्लास को। फर्दर हम जदि गोटे जनरल रिएक्शन देखिबा, Ma plus Nb gives rise to C, the rate is equal to 1 by M multiplied by over rate of disappearance of A is equal to 1 N multiplied over rate of disappearance of B which is equal to rate of formation of C। तापरे ता रिलेटेड प्रॉब्लम हमें करथिले बहुत सारा प्रॉब्लम। तापरे रेट एक्सप्रेशन और and rate constant for a normal reaction. So rate is equal to K multiplied over concentration of A to the power X into concentration of B to the power X. This is the rate expression. What is X and what is Y? X plus Y denotes the order of the reaction.
and further we had discussed many questions related to this section also. तापर आमर थिला कोन आमर थिला फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन को कौन फैक्टर अफेक्ट करे नेचर ऑफ द रिएक्टेंट इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टेम्परेचर सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट रेडिएशन जो माने आगु पढिछ सेमान को बहुत इजी लागिवो क्विक रिवीजन हे जिवो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट जदि देखिबा आयनिक कोन फास्टर हो मॉलिक्यूलर कोन स्लोअर हो पुणी आम जब देखा जार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल थी सी स्लो रिएक्शन देखेबा जार लेस स्टेबल थी सी हाई देखेबो रिएक्शन तापरे रेट ऑफ रिएक्शन फर्दर इंटरनल स्ट्रक्चर ऊपर भी डिपेंड करछि जेमि बॉन्ड ऑर्डर जार हाई थिबो तार रिएक्टिविटी कम बॉन्ड ऑर्डर जार लो थिबो तार रिएक्टिविटी अधिका ए भले हम डिस्कस करथले कंसंट्रेशन जते अधिका हबो तुमार रिएक्टिविटी सेते अधिका हबो कैटलिस्ट किछि स्पेशल कैटलिस्ट रहिछि जोगुडा को स्पेसिफिक कैटलिस्ट रहिछि जोगुडा केमिकल रिएक्शन को फास्टर करथाय आ जोगुडा को रिएक्शन को स्लोअर करथाय ताको हम कहबो इनहिबिटर ओके ताको हम कहबा इनहिबिटर तापर हम देखतेले टेम्परेचर जेतबेले बढ़िबो जनरली 2/3 टाइम्स बढ़ी थाए एंड इट इज इक्वल टू kT plus 10 divided by kT. Remember the temperature is increased by 10 degree Celsius. फर्दर तार रिलेटेड प्रॉब्लम भी करिছে আমি তলদিনে এবং দেখিছে গোটে জেনারেল প্রবলেম নেইছে যদি n টাইমস বড়িবো মানে 10n টাইমস যদি বড়ুছি 10n amount रे बढ़ुची that is T2 is equal to T1 plus 10n ताले n is equal to आसीबा हमरो T2 minus T1 by 10 and further एठी हमें apply करिगे we can get that kt plus 10n by kt is equal to mu to the power n what is mu is equal to your temperature coefficient ये ଗୋଟେ general formula थिला तार रिलेटेड प्रॉब्लम सरफेस एरिया जते बढ़िबो रिएक्शन रो स्पीड मध्ये सेते बढ़िबो रेडिएशन जदि रहइबो किछि रिएक्शन रहिछि लाइक एक्स रे यूवी रे गामा रे विजुअल रे एमान को ऊपर डिपेंड करछि तो सेमान कर रेडिएशन जतले बढ़िबो रिएक्टिविटी भी बढ़िबो मॉलिक्यूलरिटी कोन ना द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शन स्लो स्टेप रे जति की मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होइथियो whereas the number of reacting molecules whose concentration actually decreases throughout the reaction is known as order of reaction and order can be 0 or fraction but never exceeds 3 whereas molecularity cannot be 0 or fraction in general it does not exceed 3 further order is determined experimentally whereas molecularity is determined theoretically and for order all the steps are not necessarily required but for molecularity all the steps are required multi step reaction रे जो देखिबा order different step ପାଇଁ different हे थाए किंतु गोटे multi step reaction रे molecularity सब सेम थाए ऑर्डर केवल मेकानिज्म से तो रिलेट करेनि कि मॉलिक्यूलरिटी मेकानिज्म से तो रिलेट करे जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो गुडा मेटल मीडिएटेड और फोटोकेमिकल रिएक्शन सब जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही थाए और से अनुसार हम डिटरमाइन करथले दैट k नॉट इज इक्वल टू x by t and its unit is mole liter inverse second inverse t half is equal to a by 2 k naught these are the two graphs related to zero order reaction and therefore further the first order reaction is has expression given by k1 is equal to 2.303 by t log a by a minus x and the half life corresponding and the unit is second inverse the half life is equal to 0.693 by k1 and different graphs we have already introduced for first order reactions then तापर हमें देखथिले प्रणाम राम तापर हमें किछि क्वेश्चंस भी फर्स्ट ऑर्डर को नेकी करथिले बहुत सारा क्वेश्चन प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन गतकाली हमरो आप रे सत्यजित कहथिले जे सर आपण एते क्वेश्चन करैचंदी लागुची सत्य जेंति मोर थ्योरी क्लास नो एडा होची न्यूमेरिकल क्लास तो प्रेशर कथा जदि देखिबा प्रेशर रे हमको कैरिंग फॉरवर्ड करियो पड़ियो जे कोन रहिची इक्वेशन बेस करके हमको सेडे k1 रो एक्सप्रेशन बाहर करियो पड़ियो दैट इज 2.303 by t log इनिशियल प्रेशर by फाइनल प्रेशर ठीक अछि तापर फर्दर आस्तिला हमरो किछि प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्रेशर भी थिला एवं तापर पर हमें डायरेक्ट पळिथिला हमरो स्यूडो फास्ट ऑर्डर माने लागुची फास्ट ऑर्डर किंतु सॉरी लागुची सेकंड ऑर्डर फास्ट ऑर्डर किंतु होउची सेकंड ऑर्डर ठीक अछि आ एया पछरे रीजन होउची जे वाटर रो कंसंट्रेशन बहुत हाई थाए ठीक अछि सेतने हमको लागुची गोटे होउची गोटे
expression for unit of rate constant of nth order ର formula ଥିଲା mole liter inverse second inverse mole liter inverse ର power 1 minus n into second inverse ଏବଂ half life period ର expression ଥିଲା general expression that is 2 to the power n minus 1 minus 1 divided by n minus 1 into a to the power n minus 1 into k. Further, t half is, if it is directly proportional to a, then it is zero order. If it is does not depends upon a, it is first order. If it is inversely proportional to a, then it is second order. This is the general format you have to remember. तापर further n is equal to 3 by 2 पकेले t half n is equal to 3 n is equal to 3 by 4 n is equal to 4 by 3 पई t half ର expression बाहर करिया पई तुमको कुहाइथिला आशा करछि समस्त बाहर करथिबो but remember these are not quite essential. So t half is equal to मैं प्रथमे केवल 3 पई solve कर दोछि 2 to the power n minus 1 that is 2 to the power 2 minus 1 divided by n minus 1 that is 3 minus 1 into a to the power n minus 1 that is 3 minus 1 that is 2 multiplied by k that is equal to 4 minus 1 that is 3 by 2 a square k. अच्छा हो ठीक अछि सुश्री याको करि नबो whereas 3 by 2 पई जदि हम देखिबा half life period is 3 by 2 for 3 by 2 this 2 to the power 3 by 2 minus 1 that is 2 to the power half minus 1 then 3 by 2 minus 1 that is half multiplied by a to the power half into k. So I could solve कले 2 to the power half माने root 2 minus 1 divided by half टा ऊपर पळेले 2 mo हिजिबो multiply हिजिबो 2 divided by a to the power half into k. ठीक अछि but basically remember this general format that t half for a general reaction is inversely proportional to a to the power n minus 1. n जगह जदि हम 1 पकेबा टोटली डिपेंड करूनी n जगह जदि हम 0 पकेबा ताले एटा -1 आछि a to the power -1 ठीक अछि दैट इज a n जगह 1 2 जहां भी पके परु सो एटा जनरल रिएक्शन एक्सप्रेशन फर्दर t half is equal to केते आसीबो ना 2 to the power फार्मूला अनुसार पकेले 3 by 4 minus 1 3 by 4 minus 1 माने minus 1 by 4 minus 1 by 4 minus 1 divided by minus 1 by 4 multiplied by a to the power minus 1 by 4 into k. So solve kale 2 to the power minus 1 by 4 let it be 2 to the power 1 by 4 solve kale 1 by 2 to the power बा 2 to the power minus 1 by 4 एमदी फॉर्मेट रे रहू नहले भारी भल लागियो देखिया पई एमदी फॉर्मेट रे रहू 4 by 3 ପାଇଁ କଲେ 4 by 3 ରେ 4 by 3 minus 1 4 by 3 minus 1 ମାନେ 4 minus 3 1 by 3 so এটা আসলো 2 to the power 1 by 3 minus 1 divided by this is equal to again 1 by 3 minus 1 by 3 a to the power 1 by 3 into k. So in this way you can derive. Okay. तापर हम देखते activation energy is equal to threshold energy minus reactant energy. ଆଉ further हम देखते कौन what is threshold energy? Threshold energy is the minimum amount of energy required for the reactant molecule to produce the product. And what is activation energy? The extra energy corresponding to the intermediate state is known as activation energy. और reactant energy होची average molecular energy. Average molecular energy of the reaction is known as reactant energy. तापर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखथिले मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कोन कहले ना जो मानेकर कोन रहिथि जो मानेकर काइनेटिक एनर्जी बहुत थाए किंबा बहुत लो से मानकर संख्या बहुत कम देखाउ थले काइनेटिक एनर्जी इज वेरी हाई कोन कहले से ना काइनेटिक एनर्जी इज वेरी हाई और वेरी लो एके तो बहुत हाई हेतिबो नहले बहुत लो बहुत हाई माने ए पार्टडा बहुत लो माने ए पार्टडा एमानक संख्या कम
किंतु जो मानकर काइनेटिक एनर्जी बहुत अधिक सेमानक संख्या कम अधिक फ्रैक्शन अधिक सो एटा होची मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बहुत जनकर रही मॉलिक्यूल रो ता माने एक्टिवेटेड कौन होता है ना किछिटा मॉलिक्यूल ही होता है सब मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड ही न थाए जेतेबेले आमे टेम्परेचर बढ़ई थाउ सेतेबेले कौन होची मॉलिक्यूल कोलाइड करथाए आ एनर्जी ट्रांसफर होइछे जा द्वारा सेमानकर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ी थाए आ से फ्रैक्शन ले भी बढ़ी थाए बुझियला ये थिला हमर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ओके तो आमे एबे देखिबा that how activation energy can be related to the temperature of a reaction how it can be related to the temperature of a reaction what the temperature of reaction से तो केमती activation energy depend करे so it is known as your RNS equation आज हमें केवल RNS equation और ता related problem करेगा RNS equation सरीले पिला माने आउ हमर नाही प्रॉब्लम पार्ट आ गोटे ही रोची कोलिजन थ्योरी तो कोलिजन थ्योरी आ गोटे क्लास माने आ गोटे रु दुईटा क्लास मैक्सिमम मु नेबी ए चैप्टर को सारिबा पय बहुत अधिक दिन एडा टाइम को झिकी देछि किंतु एडा बहुत कम टाइम रे हे जाय पारे किंतु मो टिके अधिक टाइम अधिक क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करेछि आरएनएस इक्वेशन कोन देखिबा आरएनएस होचंदी जने साइंटिस्ट ठीक अछि साइंटिस्ट तो ऑब्वियसली बा केमिस्ट भी आरएनएस से इक्वेशन जोटा से कहउतले जे आरएनएस इक्वेशन it has been derived from Ventov derivation is not required ठीक अछि तथापि हम derivation कहि तो RNS equation अनुसार K is equal to rate of a reaction is equal to A multiplied by e to the power minus a e to the power minus EA by RT. What is EA? EA means activation energy. What is R? That is universal gas constant, which is the expression that is 8.314 joule Kelvin inverse mole inverse or 2 calorie Kelvin inverse or 0.081 liter atm inverse mole inverse. So this is the general expression and where A is equal to कौन RNS constant where A is equal to RNS constant तो सर आमे RNS से constant केमती बाहर करियो ता पई भी अछि ठीक अछि ग्राफ रो आमे ताको RNS constant को बाहर करि परिबा what is EA EA is equal to EA ये माने C कोडा कौन सर ये माने एक्टिवेशन एनर्जी ये माने होची एक्टिवेशन एनर्जी ए सब सोई पड़ला ना सब पळेलो कुआडे कुआडे आज तो महालया सब बुलिया को पळेलो कि टी माने होची एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो समस्त को गांधी जयंती शास्त्री जयंती महालया अमावास्या वज्रकाली पूजा नवदिनात्मक पूजार अयम आरंभ आज मूलदुआ काली आरंभ यही सब दिन भल दिन समस्त को बहुत बहुत शुभेच्छा एवं स्वागत यार डिराइवेशन दरकार नहीं मु पढ़ेबी तथापि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जदि तो दरकार नहीं तथापि मु पढ़ेबी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट which is the expression केते formula केते that is 8.314 joule Kelvin inverse mole inverse or 2 calorie nearby 2 calorie Kelvin inverse mole inverse. This is equal to again 0.0821 liter atm mole inverse Kelvin inverse. विष्णुप्रिया प्रणाम बहुत दिन पर विष्णुप्रिया आछंदी हला तापर हमें एक्टिवेशन एनर्जी रा डेरिवेशन करबा हिंदी हाउ डिड यू डिराइव हम कहबो सर हाउ डिड यू डिराइव लेट्स शो अस तो प्रथमे हमें एटा स्टार्ट ऑफ करिया पूर्व हमें गोटे इक्वेशन नबा दैट इज वेंट ऑफ इक्वेशन ठीक अछि तो वेंट ऑफ इक्वेशन हम कहन सर वेंट ऑफ क्वाड पळे आसले वेंट ऑफ सबुडी अछंदी सॉल्यूशन चैप्टर भी अछंदी इवन केमिकल काइनेटिक्स रे भी अछंदी तो फ्रॉम वेंट ऑफ इक्वेशन प्रीवियस पेज तमे टिके बैक करिके लिखि परिबो विष्णुप्रिया यूट्यूब रे सेटा फायदा रहछि जे तमे टिके बैक करिके लिखि दे परिबो ठीक अछि बहुत भल रे आगु को जाओ विष्णुप्रिया बस आओ
तमे तुमर जीवन लक्ष्य स्थल रे खूब शीघ्र पहुंची जाओ। एटा होची हमर एक्सप्रेशन फॉर वेंट ऑफ इक्वेशन। सो वेंट ऑफ इक्वेशन ताले आज विष्णुप्रिया जन्मदिन बोधे। विष्णुप्रिया हैप्पी बर्थडे। तुमर जीवन आउरी सुखमय हो। भगवान तुम जीवन को खुशी रे रखंतु एवं तुमर चलापथ कुसुमित हो। तो एटा होची हमर फर्स्ट एक्सप्रेशन इक्वेशन नंबर 1। तापर हम ताकू डिराइव करबा कोन ना फर्दर हम जदी को देखिबा जे kc not it is k, this is not kc, this is k, ln k. Ln k is your rate constant. Ln k is equal to your rate constant. Okay, ln k माने rate constant. फर्दर याको हमें इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 we get एक्चुअली मां मु भी तिथि अनुसार बहुत पालन करे। तो तिथि अनुसार हैप्पी बर्थडे की with respect to t we get या पर ए मास रे हमर विवेक सारंग जन्मदिन पड़िबो भी। सो इंटीग्रेशन ओवर d by dt करबा पर टिके सॉल्व सजै देबा सजै देले कोन हबो ना d ln k is equal to डेल्टा ए by rt स्क्वायर। डेल्टा ए बा सिंपली ए भी नहीं परिबा ए by rt स्क्वायर dt। तो इंटीग्रेट करबा एबे इंटीग्रेट करले इंटीग्रेशन साइन दे देबा। दिस इज इक्वल टू ln k रो नवेम्बर रे बसंत सारंगर किंतु ए मास रे अक्टोबर रे विवेक सारंगर भी अछि। बढ़िया ln k रो इंटीग्रेशन कले कोन आसीबो ln k d ln k इज इक्वल टू डेल्टा को हमें डेल्टा टर्म हम लिखुनी ए बाई आर बाहर को बाहर कर दोची 1 बाई टी माने टी टू द पावर -2 कर दोची 1 बाई टी स्क्वायर को dt करछु टी टू द पावर -2 dt। यस विष्णुप्रिया थैंक यू मु तो तमर तिथि को मन रख देली तिथि मोर मन रह जाए सहज रे। ln k is equal to a by r t to the power -2 by dt। तो 1 by t हो जाए कारण टी टू द पावर -2 द फार्मूला जदी लिखिबा एटा एमती हबो फार्मूलाटा टी टू द पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 टी टू द पावर -2 + 1 divided by -2 + 1 plus c that is integration constant। तो ln k जिनसे रहला a by r into t to the power -1 divided by -1 plus c। so ln k is equal to minus a by r t plus c। equation number 2। और निहाती निहाती सुनो बढ़िया कथा हमर मीटअप टाइम रे निहाती कार गोटे बर्थडे थिवो ताला आउरी सेलिब्रेशन बढ़ी जिवो। तापर हमें ln k को हमें जदी फर्दर हमें अप्लाई करबा व्हेन t इज इक्वल टू 0 तो नहीं परिबानी t इज इक्वल टू 0 नेले हमरो एक्सप्रेशन आसीबनी ताले हमें कोन नहीं परिबा ना व्हेन एठी हमें किछि एक्सप्रेशन नहीं परिबानी t इज इक्वल टू और ताले सोनुंगर बर्थडे थिवो से टाइम रे ln के बदल रे हमें log के नेले 2.303 log k multiplied over is equal to minus a by rt plus constant let it be constant बोली ही रो ठीक अछि पर सेटा rns constant हे जिवो ताले log k is equal to केते आसीबो
minus EA by 2.303 RT plus constant. Yes, yes. Oh, November San, right, ठीक. Log K is equal to this one है log K is equal to this one है further आम जो देखा K is equal to कौन आसो ताले let it be equation number 2 आम equation number 3 आम equation टा भी यूज करिबा जो आम problem solve करिबा further equation 2 can be rewritten as 2 can be rewritten as कौन ना ln k ln टा सेपटू पळले e to the power minus a by rt हे जीवो प्लस ln c प्लस बा एटा हम एमती लिखि दे परिबा सॉरी एमती होनी सॉरी एंटीलॉग केमती कैलकुलेट करा जाए आसुनी मते लक्ष्मीधर एंटीलॉग करिवार नै केवल ताकू 10 टू द पावर करिवा कथा लॉग टा राइट साइड को पळले 10 हो जिवो सो ln के c को हमें नहीं परिवा लेट इट बी ln c is equal to ln a c is equal to ln a what is a rns constant এটা লেট নেই কি বা সে নেই কি সে করেছিল লেট c is equal to ln a so এটা কোন ইজ ln k is equal to minus a by rt plus ln a তাহলে ln a টা এপটକୁ পळे আসলে কোন হবে ln k by a কারণ মাইনাস হয়ে যাব ln k minus ln a হচ্ছে ln k by a that is minus a by rt further ln टा सेपट उठी गले k by a is equal to कोन हिजबो e to the power minus a by rt पुनी k is equal to कोन आसबो ना a multiplied over e to the power minus a by rt so this is the final expression for RNS equation which is required which is already derived okay तो k रो एठी expression पळे आसला that is a to the power minus a by rt ହେଇଗଲା ତାପରେ ୟା ରିଲେଟେଡ୍ ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦିଟା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଥିବ at t1 k1 is equal to କେତେ ଆସିବ ନା a into e to the power minus a by rt1 same reaction ପାଇଁ again at t2 k2 is equal to କେତେ ଆସିବ a into e to the power minus a by rt2 ताले एटा को हमें जदी करबा 4 5 देबा dividing equation 4 by equation 5 but dividing 5 by 4 sorry k2 by k1 format से करछे नंबर ये क्वेश्चन देखिया dividing equation 5 by equation 4 equation 5 by equation 4 we good equation 5 को equation 4 रे डिवाइड कर देबा ताले कोन पाइबा ना हम एटी पाइबा k2 by k1 is equal to a into e to the power minus a by rt2 divided by a into e to the power minus a by rt1 से अनुसार हमारा a will be cancelled out a हमारा cancel out हो गला ताले k2 by k1 is equal to this one taking logarithm on both sides we get log of k2 by k1 log of k2 by k1 is equal to केते आसबो
sorry, ln of taking logarithm ln naba, not log naba, ln nejiba. Ln of k2 by k1, ln of k2 by k1 nele is equal to ln of e to the power minus a by rt1 divided by e to the power minus a by ऊपरटा rt2 थिला, राइट, rt2 by rt1 minus a by rt1 हला। ताले ln को log रे कन्वर्ट कर ले 2.303 log k2 by k1 is equal to ln into e to the power minus a by r कॉमन बाहर जीवो, एटा कोन हे 1 by t2 minus 1 by t1। तो ln को e माने कटि जीवो, ताले एटा कोन हे log k2 by k1 is equal to 2.303 एपट को पळे आछो, ताले एटा कोन हे minus a by 2.303 r multiplied over 1 by t2 minus 1 by t1, which is the required expression for calculation of problems related to RNS equation। RNS equation रो related problem ए भले हमें solve करिबा। Let it be equation number 6। ठीक अछि, या को बेस करके हमें RNS equation solve करिबा। हमर ऑलरेडी डिराइव हो जाइतिला RNS equation, आ एठी हमें तार रिलेटेड प्रॉब्लम एठू देखिबा। 4 5 onwards एग्जाम रे किंतु हमर इंपोर्टेंट 4 5 onwards हमर एग्जाम रे आसीबो। सो 4 5 onwards हमको सॉल्व करिया को पड़िबो। सो वर्तमान हमें ग्राफ देखिबा जे ए रो एक्सप्रेशन हमें केमदी सॉल्व करि परिबा बा वर्कआउट करि परिबा। ए रो एक्सप्रेशन वर्कआउट करिया गले हमें ग्राफ नबा। ग्राफ का को नबा ना इक्वेशन 3 देखु छ ना, इक्वेशन 3 को हमें यूज करिबा। इक्वेशन 3 को यूज करले हमें ग्राफ पाइ जिबा। सो log k इज इक्वल टू हमर कोन आसीबो माइनस a by 2.303 rt प्लस सम कांस्टेंट log k। सो हमें एटे ग्राफ नै जिबा log k वर्सेस 1 by t, log k versus 1 by t, log k versus 1 by t नहीं गले। And this constant is equal to how much it would be? I'm already नीचे, that is let it be log a। एटा केते हिजबो log a हिजबो, कारण log a divided by 2.303। तो this constant is equal to log a आसीबो। तो हमरे ग्राफ टा केमदे आसीबो ना 1 by t से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम जो देखिबा 1 by t रो वैल्यू जेतोले 1 थिबो, माने t जेतोले 1 थिबो सेतोले log k रो वैल्यू थिबो माइनस a by 2.303 r, r plus some constant। जेतोले t रो वैल्यू इनफाइनाइट थिबो, जेतोले when 1 by t is equal to 0, when 1 by t is equal to 0, that is t tends to infinite। अवश्य प्रैक्टिकली पॉसिबल नुह। 1 by t is equal to 0, t tends to infinite, से केस रे कोन हबो ना log k is equal to केते आसीबो, log k is equal to 2.303 sorry minus a by 2.303 minus a by 2.303 r into 1 by t जगह हमें पुट करिवा 0 plus constant रहबो, that is log a। तो हमारा log k is equal to log a हिजबो, 0 plus log a, that is log a। so हमारा जेतबेले t is equal to 1 by t is equal to 0, that is t is equal to infinite हबो, सेतबेले हमर जोठी पार्ट आसीबो that is log a आसीबो, सेठी हमर log a आसीबो। तो ए भली हमें एठी ग्राफ रो पाइ जिबा। एटे स्लोप रो हमें कोन पाइबा एक्टिवेशन एनर्जी पाइ जिबा। स्लोप इज इक्वल टू कोन माइनस a by 2.303 r। बस ग्राफ टा देखिबा कथा, एठी एग्जाम रे एते आसे नाही। ठीक अछि, तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस 2.303 r। आ गोटे टाइम आसीबो जेतबे 1 by t टा बहुत इनफाइनाइट हो जइतिबो, सेतबेले माने 1 by t टा 0 हो जइतिबो, दैट मींस तुम्हारा a पार्ट दा 1 by t 0 हो जइतिबो माने a पार्ट टा
1/t 0 ହେଇଗଲା ମାନେ t ଯେତେବେଳେ ଇନଫାଇନାଇଟ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଥିବ log a। ସୋ ଏଇଠୁ ଆମେ log a ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବା ଯୋଉଟା କି ଆମର RNS କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବାହାରି ଯିବ। ସୋ log a ହେଇଯିବ ଆମର y ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ ଆଉ ସ୍ଲୋପ ହେଇଯିବ -2.303 minus a by 2.303 multiplied over r. So in this way you can determine that how RNS constant and the activation energy can be calculated graphically from this graph. ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲେଭେଲରେ ଏଇଟା କାମରେ ଆସେ। ସତରେ ଏଇଟା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲେଭେଲରେ ବହୁତ କାମରେ ଆସେ। ବହୁତ କାଲକୁଲେସନ ୟାକୁ ରିଲେଟ କରିକି ଅଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେକ୍ସନକୁ ଯିବା। ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିବା ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିକି ଆଜି କେବଳ RNS ଇକ୍ୱେସନ ଏବଂ ତା ରିଲେଟେଡ থিওরি। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ପଢିବା ଲାଷ୍ଟ থিওরি ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କୋଲିଜନ থিওরি। କୋଲିଜନ থিওরি ସରିଲେ ଆମର ସରିଲା क्वेश्चन। जो क्वेश्चन ରହିଛି द रेट इक्वेशन the rate constants of a reaction, any reaction of a reaction at 500 Kelvin of a reaction at 500 Kelvin and 700 Kelvin are 0.02 second inverse and 0.07 second inverse respectively. Calculate the values of EA and A. Calculate the expressed values of activation energy and RNS constant. ताको हमें सॉल्व करवा केमदी ना गिवन रही कौन गिवन रही रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट 500 केल्विन। सो T1 निगले 500 केल्विन and the corresponding K1 is equal to how much 0.02 second inverse. Then तामाने इटा first order reaction जाना पड़ेगा। T2 is equal to how much, that is 700 Kelvin. It is applicable for any order reaction. जे कौन सी order reaction होना कहीं की RNS equation applicable होगा। K2 is equal to 0.07 second inverse. The exam ratio how temperature depends upon the rate of a reaction, rate constant of a reaction सहित temperature रो कौन रिश्ता बा कौन संपर्क माँ पुओ ना बाप झियो ना बापा माँ को संपर्क ताले तमे कहबो ना बापा ना माँ ये होची कौन RNS इक्वेशन। ठीक है द रिलेशनशिप बिटवीन का K and T। इवन आम टेम्परेचर कोफिशिएंट भी नहीं थिले एतिकी डाटा रही हमको ए आउ ए बाहर करबार अछि ताले फार्मूला यूज करबा इक्वेशन नंबर 6 को यूज करबा दैट इज log k2 by k1 is equal to minus EA by 2.303 R multiplied over 1 by T2 minus 1 by T1। पिला माने फार्मूला गुटाक सेतेबेले मन रहबो जेतेबेले हमें रेगुलर बेसिस रे प्रैक्टिस करबा नॉले सब भूली जीवा। K2 माने 0.07 divided by 0.02 this is equal to minus EA by 2.303 R multiplied by 1 by R जगह हमें कैलोरी नहीं जीवा 2 कैलोरी फॉर इजी सॉल्व करबा पई बहुत इजी वे रे सॉल्व करबा पई हमें 2 कैलोरी नहीं जीवा इजी वे रे सॉल्व करबा पई जदी R रो वैल्यू किछ देई नथि हम तो 2 नबा इजी वे रे सॉल्व होई जेबी 1 by T2 माने केते T2 माने हमर अछि 700 minus 1 by 500 हला। सो हमें सॉल्व करले log 0.07 divided by 0.02 सो log 7 by 2 लिखि दे परिबा log 7 by 2 एटा हमकु डाटा दबार अछि log 7 रो वैल्यू केते बा log 2 रो वैल्यू केते log 7 एटा ओडे डाटा देइनी किनु मु डाटा वर्तमान पई देइ दोछि log 7 by 2 that is log 3.5 is equal to 0.
544 डाटा गोटे दबार थिला दैट इज log 3.5 is equal to 0.544. So minus a by 2.303 into 2, that is minus 4.606 multiplied by 1 by t2 divided by minus तले उतरे कौन रखते ना 1 by t2 माने केते हमरो 1 by t2 t 700 500 so हमें एलसीएम बाहर कले it is 3500 700 के कले 5 minus 7 so it is 5 minus 7 log 7 by 2 माने log 3.5 is equal to minus a by 4.606 into 5 minus 7 which is minus 2 divided by 3500 so minus minus plus is equal to a is equal to कितना आसीबो log 3.5 रो वैल्यू हमको जाना 0.544 multiplied by 4.606 multiplied by 3500 divided by 2 आको हमें कैलकुलेटर न धरले टाइम लागिबो तेणु हमें कैलकुलेटर ही धरि नबा जदि जो हम पाखरे कैलकुलेटर बर्तन पे नहीं log k2 by k1 log k2 by k1 विष्णुप्रिया k2 by k1 so 7 by 2 माने 3.5 ना एटा यूज हला 7 by 2 माने 3.5 यूज हला सोनू कहले 4348 so एटा आंसर आसीबो 4384.912 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स कैलोरी पर मोल इनवर्स ताको हमें केल्विन इनवर्स रहबनी कैलोरी पर मोल इनवर्स हम इवन केल्विन इनवर्स रहिबो काइना 1 by t रही ना एक्सप्रेशन 1 by t मल्टीप्लाई so let it be only calorie mole inverse ठीक है फर्दर तापर किलो कैलोरी रे कन्वर्ट करले केते हिजो ना 4.384 किलो कैलोरी 4.384 किलो कैलोरी so activation energy is equal to 4.384 किलो कैलोरी log 2 minus log 2 minus 0.3 log 7 minus 0. ମୁଁ ବୁଝି ପାରୁନି ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା କଣ କହୁଛ ଏଇଟା ଆମେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ୟୁଜ କରିପାରିବା log 7 minus log 2 बट log 7 ର डाटा ମୁଁ ଜଣା ନାହିଁ ନା ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ ମୁଁ ୟୁଜ କଲି ନାହିଁ एक्टिवेशन एनर्जी हमारा आसीगला 4.384 किलो कैलोरी कैलकुलेशन करके 3 आवर पळिबो टाइम एमिति नुआ एटा एग्जाम रे आसे भलिया क्वेश्चन आ टिके इजी लेवल रो क्वेश्चन आसे कैलकुलेशन जेमि इजी रहइबो हला तापर हमकु बाहर करे अछि एक्टिवेशन एनर्जी ए बाहर करे अछि तो तमे जे कोनसी हमें जानि छे वी नो दैट k is equal to a into e to the power minus a by rt ताले हमें k t1 नियो बा t2 नियो k1 नेले एटा t1 हि जिवो ताले k1 केते k1 होची 0.02 और t1 होची 500 so k1 is equal to 0.02 is equal to a into e to the power minus e केते 4384.912 कैलोरी रे नबो 4384.912 divided by r होची 2 कैलोरी into t1 होची 500 so 0.02 is equal to a multiplied over e to the power good morning Shubham
minus 4384.912 divided by 1000. So that is 4.384 minus 4.384. তাহলে 0.02 is equal to a into e to the power minus 4.384. So এটা ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଟା ଦବାର ଥିଲା that e to the power minus 4.384 କେତେ e to the power minus 4.384 डाटा सब मिसिंग ଅଛି ଏଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଟା क्वेश्चन ରେ ଦବାର ଥିଲା କମା e to the power minus 4.384 বা ଆଣ୍ଟି ଲଗ୍ ଏଭଳିଆ କିଛି ଦବାର ଥିଲା is equal to 0.012 is equal to 0.012. So ଏଠି ଆମେ apply କରିବା that a multiplied by 0.012 derivation କିଛି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ exam purpose ରେ important ନୁହଁ. So a is equal to 0.02 divided by 0.012 that is 6 0. About 10 to the power minus 3 and about 10 to the power minus 2 that's 6. So as 1 by 6 multiplied by 10 to the power minus 1 1 by 6 multiplied by 10 to the power minus 1 1 by 6 means 0.16 so 0.16 so it has to go 1.6666 by 1.66 ଆପଣ 11th କ୍ଲାସ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଲି ଠକୁଛନ୍ତି ଶୁଭମ 11th କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ରେଗୁଲାର ଆସିବେ କି ନାହିଁ ମୋତେ ଡର 12th ପିଲା ଯେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି 11th ପିଲା ଯଦି 10-15 ଜଣ ନ ଆସିବେ କ୍ଲାସରେ ଜୋସ୍ ଆସିବନି 12th ପିଲା ଯେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି so 1.66666666666666 ଚାଲିବ ଇଏ ସଲ୍ଭ କଲେ ତ a is equal to this one what is the unit of 1.6 ଯଦି ଆମେ ୟୁନିଟ୍ ଦେଖିବା ଦେଖ k1 ର ୟୁନିଟ୍ ଯାହା a ର ୟୁନିଟ୍ ତାହା ରହିବ କାରଣ e to the power something ର ୟୁନିଟ୍ କିଛି ନାହିଁ it is a constant term so k1 ର ୟୁନିଟ୍ ଯାହା a ର ୟୁନିଟ୍ ତାହା so it is second inverse ଠିକ ଅଛି ଓକେ ତାହେଲେ ଆଉ ଦି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଦିଅ ଆଙ୍କର ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟା ସରିଯାଉ ସରିଗଲେ ତମର କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଠିକ ଅଛି ଶୁଭମ ଆଙ୍କର ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟା ସରିଯାଉ ତାପରେ ତୁମର କ୍ଲାସ୍ କରିବା ତାପରେ ତ କ୍ଲାସ୍ ଟେଷ୍ଟ ହବ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ତମର ଗୋଟେ ଦିନ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ ବରପତରକୁ ଓସ୍ତପତର ଗୁରିକନ୍ୟାକୁ କାଳିଆ ବର ନୁହଁ ବରପତରକୁ ଓସ୍ତପତର କ୍ଲାସ୍ ହବ ଅଧା ଦିନି ତମର କ୍ଲାସ୍ ହବ ଅଧା ଦିନି 12th ପିଲାଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ରେଟ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦ specific rate constant for a reaction increases by factor of 4 increases by a factor of 4 if the temperature is changed from if the temperature is changed from 27 degrees Celsius to 47 degrees Celsius ପିଲାମାନେ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ସରିଲା ପରେ ଆମେ କଣ ପଢିବା ଆମିନ୍ କୋଉଠି ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ find the activation energy of the reaction so ଆମେ ଦେଇଛି କଣ ନା increases by a factor of 4 if the temperature is changed from 27 so T1 ହଉଛି 27 degree Celsius that is 300 Kelvin
T2 होची 47 डिग्री सेल्सियस, that is 47 होले that is 320 केल्विन। मु हिंट्स दे दोची, सॉल्व तमे निजे करिकि दबो। तापर हमरो K1 देची, K1 let it be K1 is equal to K1 रखो, but K2 दा इंक्रीज हो जाउची 4 K1 हो जाउची, K2 is equal to 4 K1, K1 is equal to 4 K1 is equal to K1, but K2 is equal to 4 K1, and you have to find the activation energy ये कौन बाहर करियर अछि, and given that R is equal to 1.98 calorie। आउ किछि तुमको डाटा देइनी, तमे तमन निजे यूज करियो। ठीक अछि, तो एटा नेक्स्ट क्लास रे समस्त सॉल्व करिके आनिथिबो। आउ गोटे क्वेश्चन दोछि भी से भलिया K1 equals to K1 केमदे, अरे K1 दा K1 हबनी कि K1 is equal to K1 निजे निजे सहित व्हाट डे टुडे आज होची महालिया माने महालय तो नो महालय मु ताको हिंदी मजारे कहूची महालय, बट टुडे इज महालय अमावस्या। आज दिन बहुत खास। The rate constant, good morning Ditishri, very good morning। महालय माने मागना, यस आज होची महालय पूजा। द रेट कांस्टेंट प्लस आज होची गांधी एवं शास्त्री जयंती। रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन तामाने भाभी दियन जे महालय दिन ही से जन्म होइतिले गांधी जी आ शास्त्री जी, दिजन जार अलग अलग। For the rate constant for the first order decomposition of H2O2 is given by log K is equal to 14.34 minus 1.25 into 10 to the power 4 K by T। Calculate the EA for the reaction। First question, next, what happens to temperature? What temperature will its half period be? What will be the temperature? What will be the temperature? महालय दिन जन्म होइथिले बोली कोन विष्णुप्रिया एक मेसेज देइथिले जयंती रे सेलिब्रेशन ना कॉलेज महात्मा गांधी जयंती रे सेलिब्रेशन होची, पोस्ट सेलिब्रेशन होची, कॉलेज भीतर सेलिब्रेशन होची स्वच्छता का। व्हाट विल बी द टेम्परेचर if its half life is 256 minutes। आउरी गुडे प्रॉब्लम अछि पिला माने आउरी 1 2 3 4 टा प्रॉब्लम, 4टा प्रॉब्लम मु बेसिकली सब गुडा एनसीईआरटी और बीरो मिसे की सब प्रॉब्लम करे दूची जा द्वारा तुमको भलो हबो माने प्रैक्टिस करिवारे आउ आगु को बढ़िवारे।
ତ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ପେସ୍ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି କିଛି। କୋଲିଜନ ଥିଓରି ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ କାଟାଲିଷ୍ଟ, yes, ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ କାଟାଲିଷ୍ଟ ଅଲରେଡି ପଢି ଦେଇଛେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା, ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ କାଟାଲିଷ୍ଟ ପଢି ଦେଇଛେ, ଆଉ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ଏତେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन होची the decomposition of N25, last question, the decomposition of N25, the decomposition of N25 the decomposition of N25 at 40 degree and 60 degree Celsius decomposition of N25 at 40 degree and 60 degree Celsius are found to be ମୋର କିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନି ସୁଶ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡରେ କାହିଁକି ପଶିବନି ପଶେଇବା ନା ଚିନ୍ତା କରନି so the decomposition of N25 at 40 degree Celsius and 60 degree Celsius are given by decomposition ना बाहर दिल्ली से एक्चुअली बहिरू क्वेश्चन टा देखଥିଲି ତ ଦେଖି ଲେଖୁଛି ନିହାତି ଭାବେ ହେଇଯିବ ସେମିତି ଆଉ decomposition of N25 at 40 degree and 60 degree are given by the rate constants given by the rate constants as rate constant as 25.7 into 10 to the power 5 second inverse and 178 into 10 to the power 5 second inverse respectively. Calculate the EA. Calculate the EA activation energy and RNS constant and RNS constant. हमको दीटा कैलकुलेट करवार थिला गोटे RNS constant और activation energy plus आउरी क्वेश्चन रही छे क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 that is predict the rate constant at 30 degree and 50 degree Celsius. Predict the rate constants at 30 degree and 50 degree Celsius. तो एटा सॉल्व करिक आस्तिबो नेक्स्ट क्लास रे ठीक अछि आउ आमे आउ तीनटा प्रॉब्लम रही छी या को रिलेट करिक एनसीईआरटी रो प्रॉब्लम तीनटा करिबा जेंति आउ टिके भलो भाबरे हमरो concept strong हबो related to activation energy सरले हमरो activation energy सर जीवो ए क्वेश्चन टा बुझियोनी बुझी देले बुझे दियंतु बुझी हेलानी क्वेश्चन रे कुहाई ची इतिश्री जे 40 डिग्री और 60 डिग्री सेल्सियस रे रेट कांस्टेंट माने K1 रे एक्सप्रेशन देछि
आ तुमको बाहर करिवार अछि एक्टिवेशन एनर्जी और आरएनएस कांस्टेंट तापरे एक्टिवेशन एनर्जी और आरएनएस कांस्टेंट को यूज करिवो फॉर 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस तापरे प्रेडिक्ट करिवो सेटे रेट कांस्टेंट कोन हबो एटा फास्ट ऑर्डर बोली एठो अवश्य जणा पडुची ठीक अछि किंतु आमे कोन यूज करि परिबानी जो हमरो को फार्मूला 2.303 बाय टी टी थिला माने सेटे टाइम थिला एटे टाइम कथा किछि आसिनी ना सो फास्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट रो एक्सप्रेशन यूज कर परिबनी आरएनएस इक्वेशन ही आपको यूज करिया को पड़िबो ठीक अछि ओके सुश्री थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी ड्यूरिंग द क्लास रे प्रथमे रिमाइंड कर देथिले सुश्री मॉर्निंग रे एवं अगेन विष्णुप्रिया हैव ए वंडरफुल डे हैव ए ग्रेट डे हैव ए great birthday have a nice birthday have a wonderful birthday and enjoy the birthday and have a strong determination in this birthday निज को दृढ़ कर आगु को बढ़ी चलो माड़ी चलो ठीक अच्छे बर्थडे को बढ़ी चलो ओ ठीक है थैंक यू फॉर जॉइनिंग द सेशन थैंक यू ऑल ऑफ यू